Hi everyone, welcome to Inspired KS. I hope you all are doing well. So, from today, we are going to start the SQL series. So, in this series, we are going to cover the SQL from basics to advanced. So, if you don't know SQL and you want to understand and learn SQL, this series can be very helpful for you. So, if you are a college student, right, and you are looking for a placement, so SQL is one of the important topic because in the interviews on it or in your assessment, companies basically prefer to ask the SQL, right? So you can get questions there. And one of the most important thing is that if you want to make your career in IT field, and you cannot miss the SQL because SQL is something that is the backbone. Everywhere, either you are going to work in data field or machine learning or software development, SQL is very much important because every time we are interacting with the database, so SQL is going to be used there. So, uh, this is our first video. I will request you guys, if you are watching this video, you can subscribe to the channel and hit the like button, right? So let's just start the video. So SQL is basically the structured query language, right? The name of the full form, you can say the full form of SQL is the structured query language. So, if you are from CS or IT background, you may have heard the name SQL, but if there is a student who is from mechanical background, right, who is from electrical background, who is from ECE background, right, they may not have listened the name of SQL. So जब हम पहली बार किसी चीज का नाम सुनते हैं तो there is one question that generally comes into our mind. So if we are listening SQL first time, what will happen? The question that comes into our mind is what is SQL, right? पहला क्वेश्चन आता है कि SQL क्या है, right? So we will understand that the SQL is basically a structured query language that we use to interact with the database. Interact with the database, right? Let's take an example. Let's understand. We have university database. हमारे पास university का database है, right? जिसमें क्या है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टेबल्स है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, राइट? हमारे पास फैकल्टी टेबल भी हो सकती है. यूनिवर्सिटी के डेटाबेस है हमारे पास. हॉस्टल स्टाफ टेबल भी हो सकती है, जहाँ पे हमारे हॉस्टल्स में जो स्टाफ काम कर रहे होते हैं उनकी डिटेल स्टोर होती है, राइट? तो लेट्स हम वी वांट टू फिश द डिटेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट. ओके, so we have to interact with our database, university database, right? So if we want to fetch something, we will be using SQL in that case because we don't have any other options. SQL is something that is used to interact with the data. So to interact with the database, first thing is that we should create a database and insert the data into database. So first of all, we will be creating the database and we will be inserting the data, right? And the second thing is that we can extract the data from our database. So SQL supports both the features. So SQL comprises both data definition and data manipulation language. डेटा डिफिनीशन का मतलब क्या होता है कि हम अपने डेटाबेस की टेबल्स में जाकर डेटा को इंसर्ट कर पाए. क्या कर पाए हम लोग? टेबल्स में जाकर डेटा को क्या कर पाए? इंसर्ट कर पाए. डेटा डिफिनेशन का मतलब होता है लाइक व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है हम अपने डेटा को क्यूरी कर पाए. इट मीन्स दैट वी
will be able to extract the data from our database. इसका मतलब होता है डेटा डेफिनेशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है जिसमें हमारे स्टूडेंट ने एक न्यू स्टूडेंट ने क्या किया, एडमिशन लिया. अब हम उस नए स्टूडेंट की डिटेल्स को हम अपने डेटाबेस में स्टोर कराना चाहते हैं, राइट. सो वी विल बी डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ डेटा डेफिनेशन लाइन, राइट. तो वहां पे हमारी डेटा डेफिनेशन काम आएगी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. एसक्यूएल का नाम सुनते ही वी ऑल have one question like, does SQL supports programming language features? So the answer is no. SQL is not a programming language. SQL is not a programming language. SQL एक programming language नहीं है. What is SQL? SQL is a command line language. So with the help of commands, we can do operations in our database. So SQL is used there. So SQL is not a programming language. That's why SQL does not support the programming language features like if statement, if else statement, or while or for loop, right? So etc. All of the programming languages features are not supportable in SQL. So SQL does not support any features of any programming language, right? One of the most important concept in SQL is the constraint. So what are the constraints? Constraints are basically the set of rules to enforce the database integrity. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, राइट. यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, राइट. हमारे पास दो टेबल्स, लेट्स हमारे पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें हम लोग स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट टेबल, यू कैन टेक एन एग्जांपल, क्लास स्टूडेंट टेबल है जिसमें हम लोग क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल्स स्टोर करते हैं. एक हमारी हॉस्टल स्टूडेंट टेबल है जिसमें हम लोग हॉस्टल में कितने स्टूडेंट रहते हैं, व्हाट आर डिफरेंट डिटेल्स ऑफ दोज स्टूडेंट, उनकी डिटेल्स को स्टोर करते हैं. अब क्या होता है कि इंटीग्रिटी क्या होती है कि इफ द सेम स्टूडेंट, लेट्स द रोल नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट इज 100, if the same student is a class student and is the hostel student, if anybody is going to fetch the details of that student, let's say he wants the name of that student, the details should be same in both the tables. That means the integrity. To maintain the integrity, constraints comes into picture. With the help of constraint, we can maintain the integrity, right? Let's go to the next slide. अब हमारे पास क्या क्या constraint है. तो हमारे पास कांस्टेंट है, वन इज द प्राइमरी की, सेकंड इज द कंपोजिट की, थर्ड इज द यूनिक की, फोर्थ इज द फॉरेन की, एंड फिफ्थ इज द चेक कांस्टेंट, एंड सिक्स इज द नॉट. सो all of these are constants in SQL. So with the help of constant, all of these are constant. With the help of these constant, we will maintain the integrity in our database. We will maintain the integrity, right? So in constant co we will understand in detail.
तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट कांस्टेंट। पहला कांस्टेंट हमारा आता है प्राइमरी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी की। स्टूडेंट टेबल क्या है हमारे पास, यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में क्या है, हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें क्या है, हमारे पास कॉलम्स हैं। एक पहला कॉलम जो है एडमिशन आईडी है, दूसरा कॉलम जो है क्या है, वो स्टूडेंट का नेम है, तीसरा कॉलम क्या है, वो स्टूडेंट की एज है, चौथा कॉलम है स्टूडेंट का रोल नंबर है। राइट। तो होता क्या है कि व्हाट इज प्राइमरी की, प्राइमरी इज कीज डिफाइंस ईच रो और रिकॉर्ड यूनिक। तो यदि इफ आई विल आस्क वन क्वेश्चन कि इस स्टूडेंट टेबल में कौन सा ऐसा कॉलम है जिसे हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते, तो प्राइमरी की उस कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं जो हमारी प्राइमरी की बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। राइट। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड, प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की इज बेसिकली द वैल्यूज ऑफ दैट कॉलम should be unique and not null. Not null का मतलब होता है values are not missing. So टेबल में देख के मुझे पता लग रहा है कि एडमिशन आईडी वो हमारी प्राइमरी की हो सकती है। राइट। बिकॉज एडमिशन आईडी क्या है, राइट, दिस इज आवर एडमिशन आईडी। एडमिशन आईडी क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आईडी वहां का एडमिशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। दैट इज नॉट समथिंग कि किसी स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होता है, वो वहां का एडमिशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी नल। और क्या करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द यूनिक एडमिशन आईडी टू एवरी स्टूडेंट। तो क्या होगा, हम वी कैन मेक द एडमिशन आईडी एज ए प्राइमरी। तो प्राइमरी की डेफिनेशन क्या होती है, इट डिफाइंस बेसिकली ईच रो और रिकॉर्ड यूनिकली। जैसे देयर आर डिफरेंट रोज, राइट, रो 1, रो 2, रो 3। रोज में क्या होंगे, वी विल बी हैविंग द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। सो ईच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैन यूज द प्राइमरी। प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। इट मीन्स लाइक इफ वी हैव डिफाइंड admission id column as a primary key, so we cannot have null values in primary key, right? Admission id cannot be null, वो नल नहीं हो सकती बिकॉज हमने उसको प्राइमरी की डिफाइन कर रखा है पहले से ही। द थर्ड पॉइंट इज दैट वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमने एडमिशन आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है, राइट, वी हैव डिफाइंड एडमिशन आईडी एज ए प्राइमरी की। If we are going to our table and we are defining roll number as a primary key, that is not possible. Because किसी एक टेबल में केवल एक कॉलम को ही प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन नॉट हैव टू प्राइमरी कीज इन द सेम टेबल। थर्ड पॉइंट इज दैट कंटेन्स द यूनिक वैल्यूज। प्राइमरी की क्या होती हैं कि ये यूनिक वैल्यूज को कंटेन्स करती हैं। So to maintain the uniqueness in our table, we basically make one column as a primary key. If the values of a particular column, right? You can see here, this is our admission ID column, और इस कॉलम की वैल्यू थ्रू आउट द टेबल यूनिक होने वाली है। और बिकॉज ये कॉलम हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड करने वाला है एवरी स्टूडेंट को, तो ये कॉलम कभी नल नहीं हो सकता। So that's why we can define this column as a primary key, right? If we will define this column as primary key, it is going to be very helpful for us because that will create some uniqueness in our database. And if we want to fetch the details of any student, we will use that primary key and we will be able to fetch the details. Let's understand sometimes what happens, क्या होता है कि
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्या होता है कि लेट्स रोल नंबर एडमिशन आईडी को एडमिशन डिपार्टमेंट ने दे दी, बट रोल नंबर क्या है, समथिंग है कि लेट्स बेस्ड ऑन द class teacher, right? They are defining the roll numbers. Maybe sometimes what will happen कि roll number को किसी class teacher ने define नहीं किया, means they haven't provided the roll number, admission हो गया but roll number नहीं मिला, ठीक है, due to any reason. So what happens कि कभी कभी ऐसा होता है कि we cannot make one column as a primary, एक कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकते। जैसे मान लो नेम है, राइट? सो नेम को हम लोग प्राइमरी की नहीं बना सकते बिकॉज किन्हीं दो या मोर देन टू स्टूडेंट कैन हैव द सेम नेम रख सकते हैं। दैट विल नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई आवर कंडीशन, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, राइट? तो it may happen that we cannot make one column as primary key. So in those cases, composite key comes into picture. What happens? कि यदि हमारा कोई एक कॉलम प्राइमरी की के कंसेप्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, बट इफ वी विल go and club two columns and create one new columns and that is going to satisfy a constraint of primary key, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। इफ इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की, तो क्या होगा, ये हमारा कंपोजिट की होगा, राइट? What is composite key? Sometimes it happens that we cannot use one column as a primary key. So in that case, we club multiple columns and club them to make a primary key. So the key is called the composite key. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। यदि हम एक से अधिक कॉलम्स को क्या करने वाले हैं, क्लब करने वाले हैं, एंड we will be able to satisfy our primary key condition. उनको क्लब करने के बाद जो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, राइट? यदि वो रिकॉर्ड हमारी प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट मींस प्राइमरी की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। वी कैन डिफाइन दैट कॉलम एज कंपोजिट की, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। द थर्ड थिंग कम्स इज द यूनिक की। बात आती है व्हाट इज यूनिक की। Unique key, as the name suggests, something that is going to be unique, right? Something that is going to be unique. So, contains unique values. Unique key क्या होता है? Basically, unique values contain करता है। Let's take an example. हमारे student tables है जिसमें हमारे पास columns हैं। Let's name है, right? Roll number है, right? Mobile number है, right? Or we can say like आधार नंबर है, आधार नंबर, right? So what will happen? This is our आधार नंबर. So what will happen? क्या हो सकता है कि we can define two columns as unique key. जैसे मोबाइल नंबर को we can define as unique key, आधार नंबर को we can define as unique, because both the values can be unique for a particular student. So a table can have multiple unique values, means we can have more than one columns as unique keys. It can have one null value. It means null का मतलब क्या होता है कि null का मतलब होता है कि null means something that is missing. Let's take an example. यदि हमारे पास लेट्स से ईमेल एड्रेस का एक कॉलम है स्टूडेंट टेबल में, बट ड्यूरिंग एडमिशन व्हाट हैपेंस कि स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी नहीं, तो वी कैन पुट एज null, दैट विल बी मिसिंग दैट टाइम, राइट? तो वो क्या होगा, हमारा null होगा।
Null means something that is missing. So if we define any column as a unique key, so to maintain the uniqueness, we can have for one record the value of that unique key can be null, but more than one cannot have the null values because that is going to break the concept of uniqueness. यदि हमारे दो records, right? This is one record, this is two record, this is first, this is second record, right? यदि हमारे टू रिकॉर्ड्स के लिए क्या है, मोबाइल नंबर कॉलम की वैल्यूज नल है, सो दैट इज नॉट द यूनिक की बिकॉज क्या है कि that is breaking the concept of uniqueness, and we understand that unique key is something that is going to be unique, right? And in this way we can understand that what is primary key. Primary key is unique key and not null. Unique key में क्या होता है, we can have the null values, but primary key में क्या होता है, we cannot have the null values. This is the only difference between unique and primary key. And primary key एक टेबल में एक ही हो सकती है, बट यूनिक की मल्टीपल्स हो सकती हैं. So I hope you got the idea about the constants. I hope you understand the primary key, composite key, and unique keys. And if you have any doubt in this video, you can go and comment in the video. I will provide you the answers. And I will request, if you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel, because in upcoming days I will be making more videos on SQL, and that will be very explain. They will be very explainable, right? In detail, I will be covering, and I will be doing hands-on as well, so you can see in those videos. So thank you for watching and have a good